सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक कंप्लीट डॉक्ट्राइन है जिसको कार्ल मार्क्स ने प्रेजेंट किया था। कार्ल मार्क्स बेसिकली एक क्रिटिक था कैपिटलिज्म का। अब ये जो डॉक्ट्राइन है उसने मिड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर पेश की गई थी। इस डॉक्ट्राइन के अंदर फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को बयान किया गया है और जो कम्युनिज्म है वो एक इसका इकोनॉमिक हिस्सा है। कार्ल मार्क्स की थॉट को बेसिकली आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो उसकी होल थ्योरी है वो एज अ तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले उसका जो होता है वो होता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, उसके बाद जो है क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड द लास्ट वन इज द बेसिकली द रेवोल्यूशन और कम्युनिज्म। सो सबसे पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो कार्ल मार्क्स का पॉइंट था वो सिंपली ये था कि हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ अ स्टेट एंड अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल गेन्स। और हिस्ट्री जो है वो इंटरचेंज भी होती है और जो वर्किंग भी कर रही है वो सिर्फ मटेरियल प्रोडक्शन के ऊपर कर रही है। और उसका कार्ल मार्क्स का ये पॉइंट था कि अगर आप वेलफेयर चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मटेरियल प्रोडक्शन का। अब कार्ल मार्क्स ने जब मटेरियल प्रोडक्शन की बात की थी तो उसके अंदर इसने दो पॉइंट्स जो हैं वो पेश किए थे। पहला तो उसने बोला था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद रिसोर्सेज है, और जो सेकंड उसका जो पॉइंट था वो था सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इससे मुराद लेबर है। इससे ये जो सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर जो लेबर के जो डिफरेंट वर्किंग है वो भी इसी के अंदर शामिल है। जो सेकंड पॉइंट है कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी का वो ये है कि क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। इस क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म का ये मतलब है कि दुनिया में जो सिस्टम्स है वो चेंज होते रहते हैं और उनके चेंज होने की वजह ये होती है कि जब वो किसी अपने से लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं तो फिर उनके अंदर वो चेंजिंग आती है और वो सिस्टम दूसरे सिस्टम को जो है वो चेंज करके वो खुद वो उसकी जगह ले लेता है। इसी तरह जैसे उसने एग्जांपल दी थी कि सबसे पहले स्लेव सिस्टम एग्जिस्ट करता था, स्लेव सिस्टम को चेंज किया फ्यूडल सिस्टम ने, फ्यूडल सिस्टम को चेंज किया कैपिटलिज्म ने, और कैपिटलिज्म को अब चेंज करेगा कम्युनिज्म। अब कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो कुछ एक्सप्लॉयटेशंस है जो कि कैपिटलिज्म करता है वर्किंग क्लास के ऊपर, उनमें सबसे पहले शामिल है कि जो प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो खुद उसको बाय नहीं कर सकते, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये नो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, उनको अपने काम में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। उस थर्ड पॉइंट इज मिजरेबल फैक्ट्री कंडीशंस एंड द फोर्थ इज कंसीडर देयर फेलो वर्कर्स एज राइवल। बेसिकली वो अपने जो फेलो वर्कर्स हैं जो उनके साथ जॉब करते हैं वो उन्हीं को एज अ राइवल कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ गेटिंग जॉब्स और गेटिंग वेजेस। अब कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के मुताबिक जो उसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर वो रेवोल्यूशन की बात करता है। वो रेवोल्यूशन इस तरह वो कहता है कि जो प्रोलेटेरिएट या जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है वो सीज कर लेगी जितने बड़े बड़े स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं या के जो स्टेट पावर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर पुलिस शामिल है, जुडिशरी शामिल है या फिर जिनके अंदर मिलिट्री शामिल है, और इसके बाद इनको सीज करने के बाद वो एस्टेब्लिश करेंगे एक रेवोल्यूशनरी डिक्टेटरशिप। अब बेसिकली इस डिक्टेटरशिप का मकसद ये होगा कि अगर कोई काउंटर रेवोल्यूशन आती है या फिर कोई काउंटर अटैक आता है फ्रॉम द रिप्लेस्ड बर्गोइसेस तो फिर उनको वो काउंटर कर सकेंगे। और एक बार जब इस ये थ्रेट खत्म हो गया उनका ये काउंटर रेवोल्यूशन का, फिर इस स्टेट की रेवोल्यूशनरी डिक्टेटरशिप की जरूरत नहीं रहेगी और फिर इसको रिप्लेस करके एक क्लासलेस कम्युनिस्ट स्टेट बना दी जाएगी। कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद उसके आइडियोलॉजी के दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप था रिविजनिस्ट का जो कहते थे कि हम बड़े पीसफुल तरीके से रेवोल्यूशन लेके आएंगे। ग्रुप का एक लीडर था एडवर्ड बर्नस्टाइन जो कि लीडर था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी का, और जो दूसरा ग्रुप था वो था ऑर्थोडॉक्स रेवोल्यूशनिस्ट का। इनका मानना था जो रेवोल्यूशन आएगी वो वायलेंस के थ्रू आएगी, मसलन स्टेट के ऊपर कब्जा करके जब तक डिक्टेटरशिप नहीं लगाएंगे तब तक फायदा नहीं है। इस ग्रुप में वो लोग शामिल हैं जो 1970 की रशियन रेवोल्यूशन के हेड थे, मसलन लेनिन एंड ट्रोट्स्की। In the World War I, Russia's army lost badly in Germany and Austria. And their second point is that leading to the 7 million casualties in the Russiites. And the third point is that the destruction of the crops and buildings by Russian army lead to 3 million
refugees in the Russia. Soldiers did not wish to fight such a war, and this war also have a severe impact on the industry. रशिया ने जो है वो बैटलिक सी से रशिया बिल्कुल कट ऑफ गया। जर्मनी ने जो है रशिया पर अटैक करके बैटलिक सी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से रशिया अपने सोल्जर्स को फूड वगैरह की सप्लाई नहीं कर पाया, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उनकी सोल्जर में बहुत ज़्यादा डेथ रेशो बढ़ गई। I conclude that in the World War I, Russia was totally destructed. February 1917 Movement Revolt. 23 फरवरी 2017 को हुआ ये था कि हज़ारों की तादाद में जो औरतें थीं वो कैपिटल की स्ट्रीट्स पर निकल आई थीं, जो कि प्रोटेस्ट कर रही थीं ब्रेड शॉर्टेज के ख़िलाफ़। इस सब के नतीजे में निकोलस जो था वहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया गया था, और उस वक्त की बोल्शेविक्स पार्टी जो उस वक्त की सबसे छोटी पार्टी थी वो वहाँ पर आ गई थी, जिसको लीड कर रहा था लेनिन ने डिमांड की जिसने पीजेंट्स के राइट्स के लिए बात की, और उसने जो पावर थी वो बोर्जिस प्रोविजनल गवर्नमेंट से पीपल ऑफ सोवियत को ट्रांसफ़र कर दी। इस सब के दौरान जो है जो जंग जारी रही, और जो जनरल कॉर्नेवल था वो डिक्टेट करना चाहता था, और उसने मिलिट्री कॉप करने की कोशिश की। इस समय बोल्शेविक्स पार्टी जो थी उसने सिटी को डिफेंड करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। 8 नवंबर 1917 को प्रोक्लेम कर दिया गया कि प्रोविजनल असेंबली को ओवरथ्रो कर दिया गया है और अब पीसफुल डेमोक्रेसी को लाया जाएगा। इस रेवोल्यूशन के तहत लोअर क्लास के राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तक उनको भी एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। अपर प्रिविलेज्ड क्लासेस लैंड ओनर राइट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि विदाउट क्लास डिस्टिंक्शन होगी। एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी का बेसिकली मतलब ये है कि जो पावर हमने अपर या प्रिविलेज क्लास को दी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और वो पावर जो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस तरह रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और क्लास डिस्टिंक्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। Soon after Bolshevik Revolution, रशियन सिविल वार जुलाई 1918 में शुरू हुई। ये वार इनिशिएट तब हुई थी जब एंटी बोल्शेविक फोर्सेस को सर्बिया में डेवलप किया जा रहा था और बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्याम में आ गई थी। ये वार रेड आर्मी जो कि कम्युनिस्ट थी और वाइट रशियंस के दरमियान थी। वाइट रशियंस को फ्रांस एंड जर्मनी की सपोर्ट थी जो कि कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी। दे डू नॉट वांटेड एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म। फाइनली बीइंग पावरफुल आर्मी, रेड आर्मी ने वाइट फोर्सेस को सक्सेसफुली डिफीट कर लिया और यूक्रेन में अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली। एट लास्ट यूक्रेन भी सोवियत स्टेट डिक्लेयर हो गया। This is Mohsin-Ali-Baig and the topic is Stalinism and Lenin's vision of communism, a brief analysis. There are a few objectives that I expect you guys to understand at the end of this brief audio lecture. So let's kickstart it with Lenin's cause, Lenin's vision. It was Alexander Sasha who was the elder brother of Lenin, who was being executed by the Tsar of Russia at that time when he was being accused of doing revolutionary activities. This execution had a deep impact on Lenin's life, and then he decides to continue his elder brother's legacy and to stood against the Tsar dynasty who had been ruling over the Russia for the past 300 years. Lenin was always optimistic about his aims of installing the ideals of communism within the Soviet Union and beyond.
the territory of Soviet Union. He wanted the Soviet Union to be a state that would be a paradise for the peasants and workers. And history accounts that Lenin worked tirelessly from his early school days to his actual day of death and lived modestly. According to the testaments of Lenin, he wanted Leon Trotsky to be the premier of the Soviet Union after him, as according to him, Trotsky did possess the true guts of leadership, and he was intelligent and level-headed person according to Lenin, who could lead his vision of communism within the Soviet Union. Now comes Stalinism. Stalinism is a political ideology that refers to the method of rule, the policies and the ideologies of Joseph Stalin after he gains power in 1929 to until his death in 1953. After gaining power, Stalin he refrains from Lenin's vision and the true ideals of communism. Rather, he resorts to violence and practical approach to the affairs within the Soviet Union. His economic policies that includes the collectivization of agriculture and his program of rapid industrial development of unprecedented magnitude to back the Soviet economy did resulted in serious consequences, as in 1932-33 famine more than 6 million people died. Stalin was keen to make the state stronger before it could be eliminated by the enemies of socialism within the state. So he believed that the state must be strong. He introduced new dogmas that includes monolithic party system, and those who opposed him were accused of treason to the party, as what came to be called as the cult of personality developed, as Stalin presented himself as the Lenin's higher and the sole interpreter of the party. Socialism in one country was his one of the doctrine, and his policies as a political opposition was dealt with treason, and he used this as a weapon in his struggle against Trotsky and the old Bolshevik. So all in all, Stalinism is associated with a regime of terror and terrorism that Stalin imposed on Soviet Union during his reign. Now comes the analysis of Lenin's and Stalin personality traits. Although both resort to violence, but Lenin never enjoyed violence. He always used violence as a mean to an end. While on the other hand, Stalin, he could only manage to resort to cunning and violence and manipulation, while on the other hand, Lenin was a level-headed person. He was the most influential person of 20th century who was able to influence the local masses of Russia to start a revolution against the Tsar dynasty. And it was Lenin's efforts that changed the Russia in a few decades from a backward and underdeveloped monarchy to full of illiterate peasant to a modern and industrialist country with one of the world's best educated population and unprecedented rights for women and for peasants. Life may not be luxurious, but nearly everyone had their roof over their heads and food on their plate, which few countries at that time could have achieved. Lenin truly believed with what his cause was all about. So that's it. Thank you.